I want you to learn relaxed. ना कोई pressure नहीं है, कोई exam नहीं है. Please understand, I am only giving you exercise so that you are able to appreciate better. Okay? Somebody got scared कि sir ये क्यों exam होगा क्या? Exam नहीं. You have to ask yourself कि what you need to know, and what I am only raising is what I am raising with you right now is that you should become conscious. अभी घर में कौन सा पानी आता है? You know, can I make the water quality better? बहुत hard. You must have heard of hard water and soft water. Yes. Huh? How do you distinguish a hard water from soft water? TDS चेक करते हैं ना सर पानी का. हाँ, पानी का TDS चेक करते. वेरी गुड. हमारे टाइम पे हम ये नहीं कहते. व्हाट वी यूज्ड टू डू इज थोड़ा पानी ले लो, मग में सोप डालो, जो वॉशिंग पाउडर, एंड देन स्टार्ट मिक्सिंग. इफ इट फ्रॉथर्स वेल, अच्छी तरह बबल्स आते हैं, मीन द वाटर इज सॉफ्ट. यदि बबल्स नहीं आएंगे मीन वाटर इज हार्ड. समझ में आया? हेलो. Yes, sir. हाँ, सो दिस हार्ड वाटर. तो आपके घर में कौन सा पानी आ रहा है चेक करो. एंड व्हाट आई वुड आइडियली सजेस्ट, घर में एक किट जैसा रखो, एक TDS मेजर करने के लिए और एक pH मेजर करने. ओके आपको क्या लगता है pH ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नॉर्मली तो 7 होता है बार. 7 7 के नीचे होता है. अच्छा, और कुछ वैल्यू? Okay, let me tell you this. You won't believe the pH of water. आप distilled water भी ले लो, मतलब कि पूरा पानी उबाल के कलेक्ट कर लो. It will never be pH 7. It will be 5.4. You know why? Due to the exposure of carbon dioxide. So carbon dioxide exposure से क्या होता है? It will become. Correct, you are right, your answer is right, but tell me how. क्या होता है? So carbon dioxide dissolves in water and forms bicarbonate and creates carbonic acid. Okay. So how much of carbon dioxide goes in depends upon the partial pressure of carbon dioxide outside. For example, आपने कोविड में देखा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी. Yes or no? Yes, sir. Yes, तो sir. उन्होंने क्या किया ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए? वेंटिलेटर में लगा ऑक्सीजन सप्लाई. बड़ा डिमांड था ना दिल्ली में कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, बिकॉज उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था बॉडी में. एंड ऑक्सीजन हैज टू बी मेंटेन्ड एट सम प्रेशर इन द बॉडी, है ना. सो ऑक्सीजन इतना होने से ही बॉडी फंक्शन करेगा. वो मीटर में एवरीबडी वुड हैव बॉट दैट ऑक्सीमीटर एंड दे विल से 94 से ऊपर है कि नहीं. यदि 90 या 85 हो गया तो ओ हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ. बिकॉज कोविड की वजह से there was problem in requirement of oxygen and many people died because of lack of oxygen. So same thing is true here. That is why we say if there is CO2 pollution lot, what will happen? More CO2 in the air, more CO2 will dissolve in, more carbonic acid will form, and this water will become acidic. Though your soil will be affected, so your agricultural crops are going to be affected by it. Whole lot of problems come. This is why this solution. So what is the quality? How much is CO2? Oh, बहुत pollution है यार, मेरे body में CO2 ही जा रहा है, I'm having breathing problem. These are all issues which come.
So to understand this, so how much is the CO2 available, so that pH will depend, and the pH will change of water. Did you realize that? Hello? अब समझ में आया? Yes, sir. So dissolved carbon dioxide. Now जब हम बफर की बात करते हैं, normally we call them as closed system. क्या है? Closed system. जानते हो closed system क्या होता है? नाम सुने हो closed system? Yes, sir. वो क्या है? सर जिसमें बाहर का कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करता. मतलब कि बाहर का फैक्ट, that is nothing is allowed to come from outside into inside. Yes, sir. Is our body a open system or a closed system? A bit of both, sir. I would Huh? say. How can Sir, it be वैसे bit of open, both? sir, it is an open system as such. Exactly, our body is an open system. So when you do the calculation of pH of blood, कभी आपको कराऊंगा, तो जो हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन है उसको हमें अप्लाई दूसरे तरीके से करना है, बिकॉज हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन ओरिजिनली वाज डेवलप्ड फॉर क्लोज सिस्टम. जब हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन करोगे, फॉर एग्जांपल से आई आस्क यू टू मेक एसिटेट बफर, आप ट्राई करो, हाउ विल यू मेक एसिटेट बफर pH 5, ओके, 0.1 मोलार एसिटेट बफर. ये नाम सुने हो? 0.1 मोलार एसिटेट बफर. कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो बोलो मुझे, आई विल हेल्प यू. हेलो? No, sir. चलो, नो सर. ओके, अब समझ लो. फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, I told you the relationship between pH is related to a compound called, a factor called pKa. नाम सुने हो pKa? नहीं जानते हो, ठीक है. pH का क्या है फुल फॉर्म? What pH is equal to what? Sir, negative log of hydrogen. Hydrogen and what? You're right, minus log hydrogen what? Sir, concentration of hydrogen ion. Okay. That is a high school definition. Okay. Today the modern definition is pH is equal to minus log activity of hydrogen ion concentration. What is it? Activity. ये नाम सुने हो? That is how much active hydrogens are there. Okay, नहीं है तो note कर लो. And activity of hydrogen ion is defined as is equal to activity coefficient, okay, एक गामा डालते हैं, multiplied by concentration of hydrogen ion. जो आपने बोला ना minus log concentration, actually that formula actually is pH is minus log activity of hydrogen ion concentration, and activity is defined as activity coefficient of hydrogen ion, that is called gamma, multiplied by concentration of hydrogen ion. So if activity coefficient is 1, then activity becomes equal to concentration, moles per liter. Okay. This is okay for dilute solution when activity becomes same as concentration. For example, if you were to measure pH of say 1 normal HCl, you can't put that formula, because if you put that formula, 1 normal means 1 or 1 molar, 1 normality and molarity are same. So if you put 1, pH will become 0, because minus log 1 is what? थोड़ा logarithm table सीख लो. Log 0, log 1 is 0. So pH कभी 0 नहीं हो सकता है. It will always be on the positive side. ठीक है? So you should know log 10 होगा तो it will be 2,
log 3 होगा तो 10 to the power 3 हाइड्रोजन आयन कौन, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए. If you don't know, please go and learn about logarithm and number. That is, log 1 is 0, log number 10 is 1, log number 100 is 2. That is, 100 is nothing but 10 to the power 2. Next time I'll tell you how to do this calculation, but suffice you to know that it is. For example, that is why you will see that when you take water, okay, if you take 1 mole of water, it will release, suppose you take, so अच्छा 1 liter of water का molarity कितना है? What is the molarity of 1 liter of water? ये कभी सवाल किसी ने पूछा है आपको? स्कूल में पूछा था सर एक बार ही. स्कूल में. तो आपने क्या जवाब दिया? सर दिया ही नहीं जवाब सर. दिया ही नहीं. अब दिया है, अभी जानना चाहते हो? चलो लेट मी टेल यू. 1 लीटर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 liter, sir. नहीं, डेंसिटी. 18. Density. What is density? Mass divided by volume. Huh? So 55. Wrong. Yeah. Density. So what? Density is 1. Density is 1. Okay. Is that clear? Density Yes. is different. Now density is nothing but, what is the formula of density? कैसे निकलता है? Mass upon volume. Mass upon volume, right? So what you need to know, 1 लीटर में कितना मास है ना? So यदि डेंसिटी 1 है तो 1 लीटर में कितना वाटर ग्राम्स में होगा? Density is 1, mass you want to find out, volume is 1 liter. 1 liter is 1000 ml because you are talking. So 1 gram is equal to 1 हो जाता है, तो 1 into 1000 will be 1000 grams. So mass of water is 1000 grams in 1 liter. Yes or no? Sir, at 25 degrees Celsius this holds true. 25 degree, वो सब ठीक है. Good, you brought that up. वो temperature dependent है. Very true, very good. So it is 1000 grams. So you have 1000 grams of water in 1 liter of water, right? Now what is the molecular weight of water? पानी की molecular weight कितना है? 18. Sir, 18. 18. So if you want to know how many moles of water is there in 1 liter of water? Given upon molar. So 1000 gram mass divided by molecular weight. Molecular weight is 18. So 1000 divided by 18 will be what? So 55.55. 55.54 molar. So molarity of water is 55.54 molar. Okay? समझ में आया? Yes. ये इंटरव्यू में पहली राउंड में ये सवाल जरूर पूछेंगे वो. यदि ये नहीं आता है तो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर इंटरव्यू, यू मे गो होम और they'll say we'll get back to you because आपका पहला राउंड में आप फेल हो गए. सो ये हर इंटरव्यू में पूछते हैं. अच्छा तूने किया, तुझे मोलारिटी आता है क्या? चलो मुझे बता 1 लीटर ऑफ वाटर का मोलारिटी क्या है. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. समझ में आया? अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज पीएच का रेंज कितना होता है? आर यू अवेयर ऑफ द रेंज ऑफ पीएच? Sir, 1 to 14. 1 to 14. 0 to 14. Okay. Okay. pH का रेंज कैन बी फ्रॉम 0 to 14. Okay. 1 to 14 नहीं है. ठीक है? Okay. Okay. Now, so what will be when you say something is acidic? तो आपको क्या लगता है? pH कितना होना चाहिए? Sir, 0 to 7. नहीं है 0 to 7. But somebody says ये solution acidic है.
तो उसका पीएच 7 के ऊपर होगा या 7 के नीचे होगा? 7 के नीचे सर। 7 के नीचे। 7 के, ये स्टैंडर्ड सवाल पूछेंगे वो कि ये कितना है। अच्छा, आपने विनेगर खाया है? चाइनीज खाना खाया है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसमें विनेगर डालते हैं? Yes, sir. अच्छा, विनेगर एसिडिक है या अल्कलाइन है? Sir, acidic. हाँ, तो कितना एसिडिक है वो विनेगर? कितना एसिटिक एसिड होता है उसमें? सर 3 सर to वो 4 4 और 5 के बीच में होता है 4 और 5 क्या? सर, वो पीएच। पीएच 4 और 5, गुड। बट पर्सन सपोज तुम्हारे पास नीट क्ले, what we call 100% acetic acid syrup bottle is called glacial acetic acid. What is it? Glacial. Okay. Hello. यस सर। Yes, It is sir. called glacial acid. So जो आपका विनेगर होता है that is only 5% solution in water. ठीक है, या तो आपका मुंह सब छाले आ जाएंगे। Is that clear? अच्छा, आप इमली यूज करते हो घर में खाने में? यस सर। हाँ, इमली यूज करते हो? तो इमली में वो एसिडिक है या अल्कलाइन है? एसिडिक है सर एसिडिक। कौन वो एसिड किसके कारण है? सर टार्टरिक एसिड। टाटा, वेरी गुड, टाटारिक एसिड, राइट। नाउ टाटारिक एसिड का कभी आपको कहानी बताऊंगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज इट? ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाम सुना है ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस सर। कहाँ? सर बायोकेमिस्ट्री। फिजिक्स में। फिजिक्स में, यू आर राइट। केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में नहीं सुना है? सर सुना है उसमें। Sir, सुना है। सुना है सर। टेल मी, आपके बायोमोलिक्यूल्स में कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है? इट्स अ वेरी रिलैक्स सेशन, डोंट वरी, कोई एग्जाम नहीं है, जस्ट एंजॉय द लर्निंग। मैंने क्या सवाल किया था अभी? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन आई आस्क्ड? सर ऑप्टिकली एक्टिव सर बायोमोलिक्यूल। ऑप्टिकल। So if you look at it, the story goes like this, that जब लुई पास्चर पीएचडी करने आया ओके फ्रांस में, तो उसका जो गाइड था पीएचडी का, he had made tartaric acid chemically. Okay, so उसका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन सब परफेक्टली मिलता था। मतलब जो उसके गाइड ने बनाया था और जो नेचुरली ऑकरिंग टाटारिक, जैसे इमली है, उसमें से टाटारिक एसिड जब निकाला, दोनों के प्रॉपर्टी मिल रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा तो जो इमली का जो टाटारिक एसिड है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? वेरएस उसके गाइड ने जो केमिकली बनाया था वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हेलो, एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस और नॉट? कुछ तो जवाब दो। कैन यू रिपीट सर? Yes, sir. मतलब कि उसके गाइड ने केमिकली सिंथेसाइज किया टाटारिक एसिड और इमली से टाटारिक एसिड प्यूरिफाई हुआ, दोनों को कंपेयर किया, उसका कार्बन, हाइड्रोजन सब वही था, ऑक्सीजन सब वही था, मेल्टिंग पॉइंट वही था, बॉइलिंग पॉइंट वही था, क्रिस्टल भी बन रहे थे, सॉलिबिलिटी भी वही था। बट जब उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर किया तो जो नेचुरली ऑकरिंग जो इमली में है दैट वाज ऑप्टिकली एक्टिव, बट उसका गाइड ने जो टाटारिक एसिड बनाया दैट वाज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो पास्चर को बोला ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करो, मेरा कंपाउंड है क्या? सब कुछ वो ये है। So what Louis Pasteur did was, उसको he was very fond of microscope.
whereas chemist microscope नहीं use करते, but he was very fond of microscope. So he put the crystals of जो उसका गाइड ने बनाया था उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उसने जो टाटारिक एसिड के जो इमली से जो निकला था उसको क्रिस्टल में देखा. सडनली ही फाउंड दैट जो उसका गाइड ने बनाया था, देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इन दैट which were mirror images of each other. उसने एक्सपेरिमेंटली देखा माइक्रोस्कोप के नीचे. So he took a forceps and separated the two who were mirror images, like separating your right hand from left hand, because both are mirror images. उसने अलग किया. Then he took these crystals and measured optical activity. He found one of them rotated it same as naturally occurring tartaric acid, whereas the other one rotated to the other side. So he found जो naturally occurring जो biological system में दिखता है, they are all optically active. You take sugar, you take tartaric acid, you take amino acid, all of them are optically active. समझ में आया? Yes, sir. Now, so इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है. Have you heard of thalidomide? Have you heard of thalidomide? Okay, आप नेट में थोड़ा सर्च करो thalidomide. PTH, it starts with P, yeah? PTHALIDO, thalidomide, MIDE. Okay, थोड़ा नेट में सर्च करो आज and tell me what you found there. Okay, then we'll discuss it tomorrow on that particular one. Okay, so why this has a lot to do with optical activity. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? So ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, दिस इज यूनिक टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. आप चाहे डीएनए ले लो, चाहे आरएनए ले लो, कुछ भी प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव. Whereas so people had to synthesize things. So for example, उन दिनों क्या करते थे? Suppose you have DNA, you know, actually there are conventions to be followed. One is optical activity, you measure it on a which machine? कौन से मशीन में टेक्निक कौन सा यूज करते हैं? Any idea? Yes or no? Hello? Sir, polarizer. It is called polarimeter. What is it? Polarimeter. ठीक है, पोलराइजर नहीं है वो, पोलैरिमीटर. तुमको ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे हम जनरेट करते हैं मालूम है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ये जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द लाइट स्प्रेड्स. ओके, so there are certain crystals, when you pass the light through that, the light only vibrates in one plane. It does not vibrate in all the directions. जैसे अपना लाइट होता है, हर जगह स्प्रेड हो जाता है. But so there are some crystals, when you pass that ordinary light through that, they only vibrate in one plane. That is why it is called a polarized light. क्या है? It is called polarized light. Okay. When you pass this polarized light through a solution containing, say, imilica tartaric acid, it will rotate that plane of polarized light to the right or left. Okay. That's why we call it. So either is a right polarizing or left polarizing. That's why जो right polarizing है, हमको उसको we show it by small d or positive. And जो left को घुमाता है उसको हम L बोलते हैं, छोटा L. There is another word called capital D, capital L, which I will tell you what it is. Very important for us. So जो plane of polarized है, तो how will I know it is plane polarized?
I told you ordinary light you can see it all over the place. आप आंख किसी भी तरह देख लो हर जगह से आएगा. But ये जो plain polarized light है वो एक ही direction में light आएगा. How will you see it? Sir, through a polarimeter. नहीं polarimeter. But if you want to see the light आपको क्या use करना पड़ेगा? So you'll have to make a rectangular slit. छोटा सा एक slit होगा उसमें. Okay, rectangular slit through which light comes out. So ordinary light को आप देखेंगे वो slit को आप move करेंगे. It is just like an eyepiece which can be rotated. You will see that कोई भी डायरेक्शन में घुमाओगे तो लाइट आपके आंख पे पूरा जोर से आएगा. बट यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन में आप रखेंगे तभी आपको दिखेगा. फॉर एग्जांपल सीधा लाइट आ रहा है तो वो स्लिट को आप उधर रखेंगे. दैट इज द रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट. ओके, सो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपको लाइट पूरा दिखेगा. ऐसा घुमा दो, you will see it as a point light. Did you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes. ठीक है ना? So it will come as a point light. So you'll have to keep. So suppose you have, say it is at 0 degrees. You are able to see full light. You move it to 1 degree, you see it only as a point. 2 degrees, any other way you go, you only see it as a point. Okay. So now you have light which is coming straight to you. Now you put a tartaric acid from imli solution into the test tube. वो light और मेरा ये जो आई पीस है जो rectangular slit है उसके बीच में लाओ. Then what will happen? The light will not come. I will not see it straight because it has changed its direction. So मुझे वो slit को घुमाना पड़ेगा. Say I may have to move it by 60 degrees to see the full plane of light coming, full light coming as a full light and not as a spot. समझ में आया? हेलो. सो कितना डिग्री को उसको हम प्लस 60 डिग्रीज बोल देंगे. ओके, इफ आई हैव टू मूव इट टू द राइट, इफ आई हैव टू मूव टू द लेफ्ट 60 डिग्रीज आई कॉल इट minus 60, or it has moved to the left. So that's what we call a D and L, small d, small l. समझ में आया? Hello? Yes, sir. So this is how you measure the optical activity of a compound. So different compounds are different. So for a long time people did not understand ये optical activity क्यों होता है. Okay? But they said yes, ये properties सब biological molecules में, मैं sugar ले लूं, मैं amino acid ले लूं, मैं peptide ले लूं, मैं protein ले लूं, मैं RNA ले लूं, मैं DNA ले लूं, मैं nucleic acid ले लूं, कुछ भी लूं biological molecule, all of them have optical activity. So if I claim I have purified this, I have to do a measurement on a polarimeter and confirm वो कितना degree rotate करता है, and does it agree with the standard people have reported. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now that we know it, we don't bother to measure by polarimeter, but ideally you should measure it on polarimeter. For example, people discovered that bacteria, okay, uses D amino acids to make the cell wall. So if I want to know whether the uses an amino acid called alanine. Alanine is normally what we see in our body is called the L-alanine. I'll talk about it in detail next time, but just for you to know. But bacteria very cleverly use D amino acid. Why? Because all our enzymes can only cut L-connected peptide bonds. So bacteria, to avoid the human enzyme so that they are not destroyed, they are very cleverly put D amino acids into their cell surface. So what happened? Our body is not able to clear it and it grows happily. समझ में आया? Yes, sir. So nature has developed a lot of that. That's why bacteria has very clever mechanism. And sometime I will tell you how antibiotics prevent this formation of cell wall.
Just to give you a hint, you can note it down, that DLR जो डाइपेप्टाइड है उसका स्ट्रक्चर और पेनिसिलिन का मिलता है. So when we take penicillin, it does not allow the bacteria to make the cell wall, so it dies. All its contents leak. So this was the big discovery of 19 जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो उसको तो समझ में नहीं आया था और किसी ने प्रूव किया था. It was only proved in about 60s or 70s. Because there are many times we use things because it's beneficial without knowing how it acts. So it is not necessary that you should know how it acts at that time. आजकल तो क्लिनिकल ट्रायल करके बोलना है कोई साइड रिएक्शन ना हो, फलाना हो, एक्सेट्रा. बट उन दिनों जब डिस्कवरी हुआ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेनिसिलिन वर्क्स, दे वर वेरी हैप्पी. दैट यूज करने लगे. ओके, उसका so what I'm trying to say is that optical activity is also a very, very important thing for us. And as far as biotechnology is concerned, even if you synthesize them, you know, जैसे लोग पेप्टाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, all of them has to be optically active. But we assume it is optically active and we do many times. कभी कभी काम नहीं करता है तो हम दोबारा जाके चेक करते हैं. But ideally you should check जो मैंने बनाया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं. Because when it interacts with an enzyme or a protein, that interaction depends upon whether it is optically active or not. Is that clear? Hello? Yes. तो ये बड़ा important concept है आपके लिए. Do you understand? So now, why you might wonder कि यार मेरा internship से इसको क्या मतलब है? Are you wondering? Because some people are coming, going, coming. हाँ. So ये क्यों? Why am I talking about all this? आपको कभी वंडर किया कि सर ये बकवास क्यों कर रहे हैं? इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप करवा के भाग जाओ ना. ये सब क्या कहानियां सुना रहे हो? सर बेसिक्स क्लियर करने के लिए. बेसिक्स क्लियर, एंड यू शुड थिंक लाइक दैट. व्हाट आई वांट इज कि आप कोई भी नौकरी लेंगे, कोई भी कंपाउंड दे दें, तो यू शुड नो जो आपको दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल ड्रग स्क्रीनिंग होता है, ड्रग का. ओके, तो यू शुड नो, सपोज यू डिस्कवर्ड ए न्यू ड्रग, उसका प्रॉपर्टी निकालना आपको आना चाहिए. सपोज यू गो इनटू अ pharmaceutical industry which is screening for new drugs. For example, say जब पेनिसिलिन को निकाला था, people would have been screening hundreds of microorganisms. कौन सा रिलीज करता है? So you might get a job in a company which is only looking for new compounds. Are you getting what I am saying? Hello? Yes. So, Yes. so you should know कि ये सब करना पड़ता है, and they will check whether you are aware of it. जब आप इंटरव्यू पे जाओगे ना, they may not expect you to have done it, but they expect you to know कि आपको ये सब मालूम है कि नहीं. Because if you know it, they'll be happy to. अच्छा, इसको इतना तो आता है, बाकी तो हम सिखा देंगे, मगर इसको तो बेसिक नॉलेज तो है. Because industry doesn't have patience to teach you like I am sitting and trying to tell you. Industry only wants somebody who is familiar. हम ट्रेनिंग पे लगा देंगे, वो हर रोज काम करते रहेंगे. बट आप उसके लिए काबिलियत है कि नहीं. So why this internship I am doing for you people is to become, you should become empowered. That oh yes sir, I am familiar, I know. वो बोलेगा आप क्या क्या टेस्ट करोगे इसके लिए. You should be able to reveal that all biological molecules are optically active. So I will check for optical activity. It's very important. कभी कभी optical activity है तो it might be a mixture of two things, just like Louis Pasteur saw when the synthetic, because synthetic organic chemists भी होते हैं जो ड्रग को बनाते हैं. Now if it is a mixture of two compounds, then you will not see optical activity. सर इसको और purify करके दे दो.
ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, आई वांट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप बोलोगे वो इंप्रेस हो, अरे वाह तू इतना जानती है क्या, सो देन तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, बिकॉज इट इज योर कमांड। आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे तो कोई भी कंपाउंड दे, सर मुझे इसका प्रॉपर्टीज दो, आपने क्या क्या किया है, क्योंकि यू हैव टू डू अ चेकिंग। वो झूठ बोला है तो आपको चेक करना पड़ेगा, सर ये वो नहीं दिखा रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 बोला है, सर इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 80 है। When you say it, then that man gets impressed, your boss gets, अरे यार ये तो बहुत बड़ा एनालिटिकल है और doesn't accept anything what is said। वो खुद टेस्ट करती है, कंफर्म करके देन ओनली आगे बढ़ती है। Are you getting what I'm saying? Hello? Yes, sir. Yes, So, sir. so what I will take you through this is to make you familiar that you must know what question to ask, और you should know ये पॉइंट्स कवर करना है। अदरवाइज क्या होता है, अरे यार तू कुछ काम नहीं करती है, सर आपने बकवास कंपाउंड दिया है तो साला काम कैसे करेगा, दैट फेलो शुड नो, यू अंडरस्टैंड। आई टेल यू लॉन्ग टाइम बैक, you know, we are trying to isolate some enzyme from heart, human heart, and there was an assay which was described। तो उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड खरीद के दिया सिग्मा से, मेरे स्टूडेंट को दिया कि ये स्टैंडर्ड यूज करके, वो ऐसे काम ही नहीं कर रहा है। दैट गर्ल गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एक दिन गुस्सा होके she wrote to the person who had described the assay, sir I've tried, I've done this, your assay doesn't work। He was so impressed with her, he told her, look, sigma doesn't work, I will send you the good substrate for a free भेजा उसने। and later that girl got a job in that company in UK। she was, मतलब कि उसका लक देखो, गुस्से में लिख दिया था, सर आपका ऐसे काम नहीं करता है, मैंने सब कुछ किया है, सब पीएच चेक किया, वो क्या एक है, poor girl worked very hard and she wrote to that fellow, and based on this she sent us, she said now it works sir, so this is the asset। मतलब कभी कभी बोलेंगे कि आपके हाथ में ये भी नहीं काम करता, ये सब इंडस्ट्री में आता है, लोग आपको डाउन करने में सोचेंगे, बट इफ यू आर स्ट्रांग, यू नो हाउ टू डू इट, यू विल बी, दे विल बी इम्प्रेस्ड, अरे यार इसको तो बहुत कुछ आता है, आई कैन ट्रस्ट हर, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि यू आर रिलायबल। इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कोई गलती हो गया वो कंपनी डूब जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज व्हाई आई वांट यू टू रीड थैलिडोमाइड स्टोरी। प्लीज रीड अबाउट थैलिडोमाइड एंड टेल मी टुमारो। तो अभी क्या क्या एक्सरसाइज दिया आपको? फाइंड द रेयरेस्ट अमीनो एसिड found in proteins। There are 20 amino acids which occurs only once or twice, and some proteins where it doesn't occur। Okay, that is the first thing you must do। Number 2 is I gave you that pH की pH 5 कैसे बनाओगे, बफर विदाउट pH मीटर, थियोरेटिकली आप कैसे वर्कआउट करोगे। और ये वाला तीसरा कौन सा क्या दिया हूं, पानी, घर पे जो पानी आता है वो कैसा है, क्वालिटी कैसा है, व्हाट आर द टेस्ट टू बी डन, व्हाट इज द ड्रिंकेबल वाटर, what can be used for washing, what can be used for watering plants, because you will not spend very good quality water to water your plants। Okay, then so जब CO2 लेवल बढ़ जाता है तो पानी का pH क्या है, does it affect the crop productivity? Are you getting what I'm saying? So आप Yes, ये सब आप थोड़ा just enjoy, I'm not forcing you to do as an exam। आपकी curiosity आप find out करिए, then you will tell me 10 other things which I didn't tell you today। Is it too much to ask? Hello? No, sir. no, sir. So I want all of you to submit me this assignment by tomorrow morning। Okay? Is that clear? Okay, sir. Okay, sir. So you want to ask me anything? अच्छा
अनुष्का राइट. नोट डाउन आज कौन कौन फुल टाइम थे, कौन पार्ट टाइम थे. हेलो रॉय. Okay. वो Yes, sir. तुम्हारा काम है अनुष्का. ओके, सेंड मी द अटेंडेंस शीट 20. वो इतने देर तक ये पहला दिन है. आई डोंट वांट टू टैक्स यू टू मच. Okay, another good news, since all of you have paid, I'll send you a link for tomorrow's lecture in the evening, 6 to 7:30. Okay, because many of you talked about genomics and proteomics interest. Okay, I'll send you the link for tomorrow's this thing, and I assure you that it will be an eye opener to you. Okay, the story is on insulin. Okay, and how the insulin structure was determined, how whole technology has shifted as of 2021, and if everything goes well, one of the fellows who has developed will be giving also, will join us for the meeting tomorrow. I'm just waiting for his confirmation. If he joins, then you will also have a chance. Let me also tell you, my internship is only one part, a small part. What ideally I want to make with all of you students from various places is what is called become a club. We want to create a club where we hopefully initially will meet every 15 days and just discuss what is happening, so that you come to know what are the new things happening. Okay, so let us form a small club. You know what is called BST club. You can see there's a registration there. So what happens once you become a member, beside this lecture, every 15 days, and if the interest is more, we'll do it once a week. We'll meet together, no extra charge for it. And I might get some expert to come and talk to you. Okay, for example, say I have, in the last 40 years, many of my students are holding all over the world important positions. I don't know how many of you went through my website. आप में से किसी ने देखा वेबसाइट? Yes, sir. Okay. उसमें who are in my team? किसी के बारे में पढ़े हो आप? Have you gone through the team members? Sir, I just looked at them. I didn't really. So I give it as an assignment. आज casually हर एक के बारे में पढ़ो. Okay. Okay. Okay, sir. Just 1 minute. Hello. Hello. Yes. Hi, Priya this side from Savitribai. How are you? From where you are? I'm calling from Savitribai. I believe you are using Savitribai. Oh, right now I'm busy, so I'll talk to you later. So go through the website, okay? Go through the home page, what all services we can provide you. Also go through my team members. There are some very interesting people you will see in that. In tomorrow's lecture, one of them will be there. Okay, he is who are in the panel. And they are all people who entered the profession when biotechnology was in its beginning. So you'll have a chance to listen to all of them tomorrow. And once you become the club member, depending upon your interest, I can invite a specialist from India or abroad. And I'm also planning to tie up with some big organizations like New York Academy of Sciences, whom you will have access. Because tomorrow, when you pass out by the term 4th year, I want you to know what are the opportunities available, where you can go, where we can help you to go, all those things, whether you want to be in the industry. So a lot of things will come. For me, I'm doing it more to benefit you people, because you saw my email which I wrote to you, yes or no? Yes. Yes. What did you feel about that email which I sent you yesterday? Do you agree with me or you disagree with me?
Sir, we agree with you. Why do you agree with me? Because all of you wrote proteomics and genomics. That's what we are interested. And I said something. Why do you agree with me and not disagree with me? Because I challenged you what you are interested in. Tell me. कुछ तो बोलो. Because you shouldn't accept so much just because a madman like me told you कि ऐसा है. Why do you think so? What, Anushka? Sir, are you talking about the one where you ask ki what will our role be in genomics and proteomics field? Exactly. Yes. Because you said you want to learn proteomics, genomics. तुम क्या करोगे वो सीख के? Anybody wants to comment on it? सर जीन कैसे रेप्लिकेट होते हैं सर, ये सीखेंगे सर. हैं? क्या बेटा? जीन कैसे रेप्लिकेट होते हैं सर, कैसे बनते हैं तो सर? वो जान के क्या है, वो मशीन कर रही है. तुम्हारी क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरप्रेट कर रही है. तुम क्या करोगे? सर हम देखेंगे ना सर कैसे बदल रहा है. देख के क्या करोगे? ये तो पिक्चर देखने वाली बात है ना. हीरो हीरोइन एंजॉय करता है, हम उनके एंजॉयमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं. है कि नहीं मयंक? ठीक कह रहे सर. तो अब now you let to plan what you want to do, where you will survive, बेटा. Are you agreeing with me? मुझे क्या, जैसे किसी लोगों ने बोला ना, मैं क्यों 10,000 दूं, 4,000 में एग्रीएबल है कि नहीं. It's not that I agreed because I said बच्चे हैं, चलो let them learn, because everything doesn't come for free, but you need somebody who can tell you how to survive. Many children are roaming around with not finding a job because what you know, like आप लोग बोलते हैं I want to learn some new techniques. आजकल ये सब टेक्निक ऑटोमेट हो गया है, तो हमारा क्या रोल है? ये बड़ा, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक जमाने में आई यूज्ड टू रन व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. ओके, I also started MSc in medical technology, PhD also, very many years ago. It was a very popular course. Number one, many girls got married because many of them, Gujaratis were there, so they had people in USA. They said, जो DMLT किया होगा उसको बहुत अच्छा job है. So many people joined my course, even paying donation, so that they get married and settle abroad. So I was very impressed कि मैं बहुत बढ़िया कोर्स कर रहा हूँ. Actually, market was very powerful that they wanted. Then I discovered कि suddenly automation आ गया. जैसे अब लाल पैथ लैब है, they only have machines. वो क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन सेंटर खोल कर रखे हैं. So ये जो भी DMLT किए हैं, ये लोग सिर्फ खून कलेक्ट करने के लिए जाते हैं वो वायल में, और उसको कलेक्ट करके उसका नंबरिंग, बार कोडिंग करके बेच देते हैं, और शाम को आपको रिजल्ट आ जाता है कि नहीं? हेलो. Actually, they all learned how to do cholesterol estimation, how to do glucose estimation. हाँ, बोलो. सर जल्दी रिजल्ट कैसे आता है? हाँ, कि सर सुबह दिया, रात को रिजल्ट आ गया. सर इतनी जल्दी कैसे आता है रिजल्ट? वो मशीन में हो रहा है ना, पैरेलली चल रहा है ना. एक में कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट हो रहा है, एक में ग्लूकोज एस्टिमेट हो रहा है, एक में थायराइड हार्मोन टेस्ट हो रहा है. सब पैरेलली चलता है. इतने सारे मशीन हैं. Some of them can analyze say 100 samples in 1 hour. समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया सर. तो व्हाट इज हैपनिंग, ये सब बच्चे अब सिर्फ ब्लड कलेक्शन के लिए जाते हैं. अच्छा, आपके घर आना है, मैं 100 रुपया चार्ज करूंगा, बिकॉज दैट द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग. व्हाट दे लर्नड हैज नो दिस थिंग, दे हैव नो कंट्रोल, दे डोंट डू एनीथिंग. पहले बच्चे बैठ के, जब मशीन नहीं होता था तो ये लैबोरेटरी असिस्टेंट सब बैठ के करते थे पैथोलॉजी लैब में.
ठीक है ना। बट मशीन आने के बाद अब कोई नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है, और हर फील्ड में ये हो रहा है। मैं तो इसमें तो बायोकेमिस्ट्री में तो मशीन ही यूज होता है। नाउ हाउ टू रन द मशीन इज व्हाट दे वांट, दे डोंट वांट यू टू डू द टेस्ट। उनको ये मालूम होना है कि आपका मशीन काम कर रहा है, वैल्यू रिजल्ट ठीक है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक लैबोरेटरी में बोलता है वो डायबिटिक है, दूसरा लैबोरेटरी का रिजल्ट बोलता है वो डायबिटिक नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। डॉक्टर बोलता है वाई ही सेज इट, बिकॉज सिम्टम्स तो नहीं है, फिर ये डायबिटिक क्यों है। जैसे बोलते हैं ना, कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, फिर सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन में तो लगता है कि उसको कोविड का सिम्टम्स है। These are all confusions today happening, but everything is done by the machine. So they want instrument operators, ठीक है ना, who will make sure कि results are reliable. आपका क्या रोल है, टेक्निक सीख के क्या करोगे। So and number 2, अब तो तुम तो ये देख रहे हो, अब सब कोर्सेस ही ऑनलाइन अवेलेबल है। Things are changing very very fast. So people say कि यार मैं क्यों कॉलेज जाऊं यार, ऑनलाइन। नाउ IITs भी ऑफर कर रही है, 1000 रुपया दे दो, एक कोर्स खत्म कर लो, पूरा जो तुम्हारा B.Tech डिग्री के लिए जो चाहिए। अब आपको भी बोलते हैं ना वो इतना कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हो, है कि नहीं, फॉर योर क्रेडिट, है कि नहीं सर? हाँ उसमें सर लैब होगी सर? बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ, लैब की जरूरत क्या है, मशीन चलाने वाला चाहिए ना। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट जो लैब का है, वो मशीन को लगा के सिखाओ ना, ये मशीन कैसे चलाना है, इसको कैसे मेंटेन करना है, इसका रिएजेंट्स टाइम पे ऑर्डर करना है। टुडे द जॉब हैज बिकम लाइक दैट। इट इज नो मोर डूइंग द टेस्ट, टेस्ट तो मशीन करता है। समझ में आ रहा है मयंक? हेलो, आ गया सर, समझ में आ गया सर। मतलब कि आप लोग थोड़ा सोचो, आजकल माहौल कैसे चेंज हो रहा है और उसके लिए मैं क्या करूं। एंड आवर कोर्सेज डोंट टीच अस दैट। तो वो बोलते हैं इंटर्नशिप पे चलाओ, देखो दुनिया में कैसा हो रहा है। तो दैट इज अ वेरी इजी वे आउट, बट उसको समझने के लिए आपको भी तो ओरिएंटेशन होना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सोचो। we'll keep discussing. I only threw in for you to think कि मेरा कल का फ्यूचर कैसे प्लान। This internship will hopefully orient you to think much bigger. हम क्या है कि we depend on others, हम खुद पे डिपेंड नहीं करते हैं। That is not very good. You should know मुझे क्या करना है एंड मैं कैसे आगे बढ़ूं। हाउ मेनी ऑफ योर सीनियर्स तो आप मिले हो जिनको नौकरी मिला है? मिले हो आप जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उनसे बात किए हो? सर व्हेन वी वर इन कॉलेज लाइक फर्स्ट ईयर में अलाउड नहीं था सीनियर्स। सेकंड ईयर वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो गया था सर। ओह अच्छा। इफ यू एवर कम अक्रॉस देम आस्क देम, क्योंकि एवरी एजुकेशन डिग्री तो चाहिए। सो मेनी पीपल आर learning the degree but equipping themselves for tomorrow. You understand? And I hope these kind of interaction with KKBiotech and all will help you to take a more informed decision. क्योंकि लोग सोचते हैं कि पीसीआर कर लिया, पीसीआर में है क्या, मशीन ही तो करती है, सैंपल डालो वो प्रोग्राम में चलती है और रिजल्ट आता है। नहीं मुझे पीसीआर आता है। अरे यार उसके लिए तो मैं हाई स्कूल का बच्चा भी मुझे काफी है, B.Tech की क्या जरूरत है कि नहीं? यस सर। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री में ये एक सडनली ये इश्यू हुआ है, ये कोविड की वजह से थिंग्स हैव गॉट आउट ऑफ कंट्रोल आल्सो। बट अब क्या देखते हैं, आपने कोविड से हम बहुत कुछ सीखे हैं कि हर किसी से मिलने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन में खत्म करो यार, है कि नहीं? So I'm not trying to disillusion you, but appreciate what is tomorrow, what is going to be the challenge,
And I hope I'll be able to take you through in the next 4 weeks how to make you think and become realistic and take an informed decision. क्योंकि लोग बोलेंगे उधर कर दे यार, इधर कर ले यार, वो नेट एग्जाम पास करने के लिए वो ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर ले यार, ये सब सुनेंगे आप. बट यू मस्ट थिंक वेल, आप क्या करना चाहते हो. यू अंडरस्टैंड? वो दैट इज व्हाई अ क्लब लाइक दिस वेयर पीपल कैन सिट एंड डिस्कस. अरे यार मैंने एक्सप्लोर किया था, आई डोंट थिंक, बट आई मेट समबडी, वो बोलता है नहीं इसमें फ्यूचर नहीं है. लोग बोलते हैं ना बायोटेक में फ्यूचर नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? हेलो. यस सर. तो वो मतलब कि फिर मेरे स्टूडेंट सब कैसे एम्प्लॉयड हैं? कुछ तो देखा होगा उन्होंने. कल वाले जब आप सेमिनार सुनोगे ना कल, you will see the panelists. Both are my students. All the three are my students. See how they found a position for themselves. How they created an opportunity. All of you have to create an opportunity. Opportunity is not waiting for you. You have to find the opportunity or create the opportunity. You understand? And Yes, sir. in the next 3 years, if we are associated, I will hopefully take you through that, make people meet, what is the new area to go. Sometime I'll share my own life story. You understand? Yes, sir. Yes, sir. So that, मतलब कि you see, I want that you and I develop a personal rapport to discuss openly, जिससे कि आपको डरना नहीं है मेरे से सवाल करने में. सर आप गलत हो, नहीं ये फील है. जैसे आप लोगों ने लिखा ना, सबने आंख बंद के प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स, और मैंने एक लेटर लिख दिया और आप सोचने लगे यार ये सर क्या बोल रहे हैं. That is why this next week I already am planned out. So I will give you the program in a day or two. I'll finalize the whole thing. So I got an expert on proteomics. I got an expert on genomics. वो क्या करते हैं, that you will definitely hear. We will also talk about how clinicians use stem cell research for treatment. There's a full 1-week course I am planning for that. Another big area is food preservation and food technology. Preservation is a very important thing. खाना खराब हो जाता है. So you should also know what are the things which is of very great use in daily life. Food preservation is a major issue. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So I have got somebody who will share with you and take you through 1 week of what are the various methods to preserve, what are the new technologies available, how does the industry process a material. For example, से आपने देखा होगा कि milk comes in tetra pack. आपने देखा है tetra pack में? Yes, sir. Okay, tetra pack में it can stay for 9 months if you don't open it. Yes or no? Yes, sir. Whereas आपके घर में जो दूध होता है 1-2 दिन में बाहर रख दे तो शाम तक खराब हो जाता है. Yes or no? हाँ सर. Whereas वो मदर डायरी से आता है तो 2 दिन फ्रीजर में डाल दोगे तो 2-3 दिन रहता है. How do they do it? How did they preserve it? क्या किया उन्होंने? अचार बनाते हो, अचार खराब नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? What is the science behind it? You understand? So my friend will take you through that. He has about 40 years experience in the industry. Okay? And then now the latest fad is on protein, pure protein based thing, what is called mock meat and all that. Then if you go through his profile is also there in the team member. Okay? There is another boy who is making artificial meat, that is cell based meat. आपने सुना होगा ना? He has set up a company in Switzerland. You will read about him in the मेरे team members में देखो सुमन दास करके. He has started a company in Switzerland. He got $4 million for showing it on the pilot scale. तो आप देखो लोग क्या क्या करते हैं. Okay, मेरा team members का आप जरूर profile पढ़ना. And one of them will be talking about microscope and
fluorescent activated cell sorter, two sisters. Okay, and what is its role in COVID? So I have planned a whole stretch. I will finalize the program in a day or two. I'll share, but I've just given you a glimpse of what is going to happen in the next 4 weeks. So you will have a session on genomics and proteomics. You'll have a session on clinical use of stem cells, how it is helping in curing diseases. You will have one on food preservation. Okay, then you will have one on microscopy and फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, क्योंकि माइक्रोस्कोपी बहुत एडवांस हो गया है. So these are all opportunity areas for you. So in the next 4 weeks, you will hear one week, someone or the other present. Is that clear? Yes, sir. And we'll make sure you get exposed and you are given assignment to go back and read like today I gave you. Okay, आप ये पढ़ लोगे तो then the rest of the sessions become easier for you. जब वो लोग बात करेंगे तो they will directly get into the subject. तब ये मत बोलना सर ये कैसे हो गया. You understand? Because they will come directly with their subject knowledge. मेरे जैसे उनको patience नहीं है बैठ कर समझाने में. थोड़ी बहुत समझाएंगे, but they are not teachers, ना. They are all working in the industry. Is that clear? Hello? Yes, sir. So don't worry, now your program is getting finalized. I'll call it off today. Tomorrow I'll have spent about I'll see whether we can have a meeting at 10 to 11 is okay. 1 hour only I'll take, but tomorrow you have an evening session from 6 to 7:30, for which I'll send you the link. Okay? Okay, sir. Okay, so I want all of you to attend it because you are going to hear three people. Three people. What is happening new in the world? Okay, where you have an important role to play to know it. So you will keep on seeing this happening, and if you feel it is good, then we'll take what to do next. Is that clear? And once your classes start, we'll only have weekend program. 1 hour or 2 hours, so that you keep gaining something. ठीक है ना? Because you need to meet hundreds of people and to know what all they do. Oh, मुझे नहीं मालूम था कि ये एरिया भी है. Okay, recombinant DNA is only a technique. Don't get carried away by it. How you use it is very important. Okay? Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So get me the reply and send me by email. Okay, Anushka, that is your job to make sure you collate all of them and I have a look at them. Okay, just to know how much you are understanding. If necessary, I'll repeat some of the lectures so that you have a better understanding. Yeah. Yes. But these things you should know. Don't worry, it is not an exam. It is just want to know whether you have participated. If you give me answer, right or wrong, I'm not worried. But I want to know you have participated and you made an attempt. I'm not looking for the right answer. Okay? आपको क्या है? I want to know how you are perceiving it. Is that clear? So none of you need to be scared कि मैं एग्जाम लूंगा. मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ. I just want to know कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं कि नहीं और क्या जवाब दे रहे हो. I must know that. I know some people will do very well, some will do bad. Doesn't matter. All will get good marks. Don't worry. And assure you that I will not fail anybody. 50% is guaranteed. ठीक है? The rest of them will have to earn. Is that clear to all of you? So no student is going to fail in this internship. Is it? So वो जो कोई डर रहा था, सर आप एग्जाम लोगे क्या? अरे यार अटेंड करो, मुझे वो है. अटेंड करने का 50% मार्क्स मिल जाएगा. बीच बीच में मत चला जाना, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कोई लोग ये भागने की आदत है. अभी ऑलरेडी 2 लोग गायब हो गए हैं. So I suggest कि I want attendance and I want you to reply to the questions given. Okay? So shall we call it a day then? I hope it was enjoyable. I hope you benefit by it. Okay? Yes. Okay. Take care. Bye. Bye. Thank you, sir.